हे गाइस, मैं हूं राघव और ये है संजीव। आप देख रहे हैं रिएक्टिंग इंडियन डुओ। टॉपिक का नाम है हमारे टाटास बिजनेस एम्पायर। 100 कंट्रीज। कितनी बड़ी है टाटा, हाउ बिग इज टाटा। टोटल टॉपिक में कवर किया गया है इस वीडियो में। 10 मिनट की वीडियो है, इसमें पूरी कवर की गई है। कहाँ कहाँ पर है भारत में, जैसा कि आप सब जानते हैं। टाटा को सब जानते हैं, टाटा ग्रुप कितना मैसिव है। इंडिया में सब जानते हैं कि टाटा कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या करती है, लेकिन बाहरी कंट्रीज में कोई नहीं जानता कि टाटा कहाँ कहाँ फैली हुई है। टाटा का क्या क्या और काम है भारत से बाहर। शोज हाउ बिग अ टाटा कंपनी इज। बिल्कुल, तो ये वीडियो देखेंगे फिर पता चलेगा कि हमें कितनी बड़ी टाटा है। भारत में तो खैर हम लोगों को पता है, टाइटन ग्रुप वगैरह सब भारत की है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं लास्ट में रिएक्शन के साथ। Bombay House. This is a simple looking head office of the Tata Group in Mumbai, India. But Tata Group is anything but simple. Started as a small trading company by Jamshedji Tata in 1868, Tata Group now has more employees than Toyota, Coke, Facebook, Microsoft, and Google combined. It now operates in over 100 countries. So let's tighten our seatbelts and take a world tour to witness the remarkable business empire of Tata Group. Our first stop is North America. Here Tata Group owns the luxury hotel Taj Campton Palace in San Francisco, Taj Boston, and one of the world's finest and New York's iconic hotel, The Pier. Tata's Tetley Tea is the second largest tea company in US and largest in Canada. They also own popular brands like Good Earth and America's third largest coffee company, 8 O'Clock Coffee. Tata's IT service company, TCS, operates 24 offices in North America. And while their animation and design lab, Tata Elixir, also operates in 8+ locations in the region. In manufacturing sector, the group operates a soda ash mining company in Wyoming, iron ore mining company in Quebec, Canada, steel manufacturing facilities in Ohio and Pennsylvania, and also a coffee production plant. In all, Tata Group employs over 20,000 people in North America, about 3 times more than how many people Microsoft employs in India. Now let's travel to South America. TCS employs more than 8,000 people in 8 countries in South America. The group is also an investor in the first submarine fiber cable network between US and Brazil. Tata has also owned world's largest sub-sea fiber cable network. Today, 25% of world's internet routes travel over Tata's sub-sea networks. From South America, let's travel to Africa and land in the port city of South Africa, Cape Town. Here, Tata Group owns the historic luxury hotel Taj Cape Town. In nearby Zambia, they own Taj Pamodzi, one of the most luxurious hotels of the country. Tatas also operate 2 wind farms in South Africa and a hydroelectric power project in Zambia. The group also owns Jokels, South Africa's third largest tea company. Tata trucks and buses are one of the top sellers in Zambia, South Africa, and Kenya. In manufacturing sector, Tata owns a chemical plant in Magadi, Kenya, which is Africa's largest soda ash manufacturer, commercial vehicle assembly plant, and a steel plant in South Africa, and finally a manufacturing and a power plant in Mozambique. From Mozambique, we will move to London, Buckingham Palace, Queen's official residence. Close to the palace, Tatas own the luxurious Taj 51 Buckingham Gate Suites. The hotel also has the world's first Jaguar suite for all the Jaguar lovers. Nearby, the St. James Court Hotel is also owned by the group. Tata's Tetley is the largest tea company in the UK. Their other European tea brands include Vitex, a popular brand in Poland, Jemka, the market leader in Czech Republic, and Grand, a coffee brand in Russia. Tata Steel is one of Europe's largest steel maker, and TCS
has been awarded as the best employer in Europe. Jaguar Land Rover is also owned by Tatas and is the largest manufacturer of premium vehicles in Britain. The group also operates design centers in London and Paris and one of the world's largest e-learning company in UK, Germany and Switzerland. Tata employs around 60,000 people in Europe and is also UK's biggest industrial employer. To end it all, Tatas also own a relatively small company called British Salt in the UK. An Indian company owns British Salt. Quite ironic if one remembers Gandhi's Salt March carried out against the British Raj only 88 years ago. Now let's travel all the way to Sydney, Australia. Here in Sydney, TCS began its first operations in Australia and now the company operates across Australia and New Zealand with over 10,000 employees and clients like Qantas, Telstra and Commonwealth Bank. Tatas also own popular Australian coffee machine brand MAP and operate data centers across Australia through their partnership with NextDC. The group also holds stake in Scarborough Downs coal project in Queensland, Australia. Finally, we have reached Asia. Let's start in the desert sands of the Middle East. Tata's Range Rover is one of the most sought after four-wheel drives in the region. Tata Motors is also a leader in the medium and heavy commercial vehicle segment in GCC countries, while TCS has multiple offices in the Middle East, including an all-women IT services center in Riyadh, Saudi Arabia. The group also owns Titan watches, a leading brand in Oman and Bahrain. They also own logistics company in UAE and the luxurious city hotel Taj Dubai near popular landmarks like Palm Jumeirah. Finally, Voltas, Tata's leading air conditioning brand, has completed major mechanical and air conditioning projects that include Burj Khalifa, Dubai, international airports in UAE and Bahrain, Ferrari Experience, and F1 racetrack in Abu Dhabi. Southeast Asia. From deserts of UAE, we will move to South Korea. Here, Tata owns South Korea's second largest heavy commercial vehicle manufacturer, Tata Daewoo. In Singapore, Tata's steel plant is the largest single cut and bent steel operations worldwide, while the group is also the largest producer of long steel products in Thailand. Tatas also own stake in oil and gas blocks and coal reserves in Indonesia and are developing power generation projects in Myanmar and Vietnam, and even operate a life sciences research company and own plantations in Singapore and Indonesia. Even Tata's Voltas has executed engineering projects like New Hong Kong International Airport and Cyberport Business Park in Hong Kong, China. Here, TCS has 6 global delivery centers. Tata's own 2 rolling mills, a refractories factory, an auto parts factory, green tea manufacturing plant, and also have a Jaguar Land Rover assembly plant. We have reached South Asia, the beautiful and scenic Maldives. Here we will find the lush Taj coral reef with white sands and scenic view. Moving ahead to Sri Lanka, Taj owns the picturesque Taj Bentota and 2 more hotels in Colombo. Tatas also provide telecommunication services in Nepal and Sri Lanka and have even deployed a hydro project in Bhutan. After our long world tour, we have finally reached India. Here, TCS is the largest Indian company. TCS becomes the first Indian company to hit $100 billion in market cap. Tata Motors is a leader in commercial vehicles segment. Titan Company is India's largest manufacturer of branded watches. Tatas also run largest jewelry store chain Tanishq, while their Tata Power is India's largest integrated power company. Tatas also own steel plants, tea plantations, automobile manufacturing units, chemical factories, and even own mobile networks and DTH company Tata Sky. Not only that, they operate airline
Vistara, and also manufacture defense helicopters and equipments. Even Starbucks in India is jointly owned by the Tatas. Tata has not only created a massive business empire but also multiple social institutions like cancer treatment centers, mathematics and science research institutes, and also the first planned industrial city of India, Jamshedpur. 66% of the group's shares are held by a charity trust. Across the world, the company has been involved in multiple social programs. Tata is truly an incredible company and has traveled a long way from Mumbai to be now present all across the world. All I can say is, this is Tata's business empire. बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो, मैं तो पूरा पूरा वर्ल्ड घुमाया भाई, आप कहेंगे। बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाई है जिन्होंने, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई भी और बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया था। हाँ, और इसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है क्योंकि पहले नॉर्थ अमेरिका गए, फिर साउथ अमेरिका गए, फिर अफ्रीका गए, फिर उधर से यूरोप आते गए, गए आते गए आते गए हमारे पास फिर एशिया लास्ट में एशिया के बाद इंडिया। लास्ट में कवर किया इन्होंने इंडिया को, और सारे के सारे कंपनी, सारे के सारे कॉन्टिनेंट में टाटा है। टाटा ने सबको टाटा कर रखा है। टाटा ने सबको टाटा नहीं करा वैसे, क्योंकि प्रेजेंट है वहाँ पे अभी भी, भाई और साहब, रहेगी हमेशा। इतना बड़ा ग्रुप है ये भारत का, जो वर्ल्ड वाइड इतना जाना पहचाना ग्रुप है। मतलब भारत के लोग सिर्फ टाटा नमक या फिर टाटा स्काई, टाइटन जानते होंगे, और एक दो चीज और है इनकी, टाटा टी जैसे हो गई, तो बहुत फेमस मतलब है। जानते भी होंगे तो इंडिया से ही रिलेटेड प्रोडक्ट जानते होंगे, उसके बाद हाँ, और प्रोडक्ट आपको अंदाजा नहीं है, बताओ स्टारबक्स में भी 50% स्टेक भारत में इनका है। सोचो, डिफेंस हेलीकॉप्टर्स, चिनूक जो है यूएस का, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके ये लोग डिफेंस के लिए भी बना रहे हैं, भारत के लिए। सोचो भाई साहब, क्या नहीं था बताओ ना, क्या छोड़ दिया इन्होंने? एक बिजनेस छोड़ा है क्या इन्होंने? सारे बिजनेस कर रहे हैं, सारे बिजनेस किए हैं भाई। और भाई होटल तो हर कंट्री में है इनका। हाँ, हर कंट्री में, और सबसे टॉप जो होटल है पूरी कंट्री का वो इनके अंडर में है। लग्जूरियस। बताओ, ताज बेंटोटा यहाँ पे श्रीलंका में, वहां पे मालदीव में ताज कोरल था, ताज दुबई पाम जुमैरा के पास, दुबई बुर्ज खलीफा के पास। भाई साहब, इनकी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कोल स्टेक्स हैं, 25% इंटरनेट का जो सीव के अंदर केबल डाली जाती है इंटरनेट के लिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वो भी 25% जो सोचो जो ट्रैवल करता है डेटा इनके उस पर करता है। 25% मतलब पूरे वर्ल्ड का 25%, सोचो का 25% कितना होता है, थ्रू ही ट्रेवल कर रहा है इंटरनेट, टाटा सबसीड नेटवर्क्स पे। तो भाई नेपाल में भैया यूटीएल इनका है, जो टेलीफोन का सर्विस है। भूटान में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, कोल स्टेक्स हैं। भाई साहब, रिफाइनरीज भी होंगी, रिफाइनरीज है नहीं बताया था टाटा ने। बताओ, ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश सॉल्ट को एक्वायर कर रखा। अमेरिका किसी कंपनी को टिकट नहीं देती। हाँ, टाटा का प्रोडक्ट है, टी बनाती है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेटली को एक्वायर कर लिया था इन्होंने। यूएस में टेटली को एक्वायर कर लिया, सेकंड लार्जेस्ट है, और नंबर 1 है ये रशिया में। ग्रैंड इनकी रशिया की ग्रैंड है, कॉफी ब्रांड। और चेक रिपब्लिक का वाइटेक्स बताया था, पोलैंड का था वो, चेक का शायद कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, वाइटेक्स था पोलैंड का। अच्छा, तो ऐसे इतने सारे नाम बता दिए उन्होंने कि हम लोग हो गए कंफ्यूज कि भैया कहाँ से बात कर रहे हैं और कहाँ पे खत्म। मैं याद कहाँ से रख पाएंगे यार। नेक्स्ट डीसी के साथ बताओ, डेटा सेंटर भी चला रहे हैं लोग, डेटा सेंटर। टीसीएस जो है पहली इंडियन कंपनी जो $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट किया था, जिसने छुआ था, अभी भी 100 उससे ऊपर है। तो ये है टाटा ग्रुप। आप बताओ, आपके हिसाब से टाटा ग्रुप बढ़िया है या रिलायंस ग्रुप बढ़िया? आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएं, टाटा ग्रुप को मानते हैं हम ज्यादा या रिलायंस को? देखिए, रिलायंस भी अपनी तरफ से काम कर रही है, पर हमारे हिसाब से तो टाटा ग्रुप से बेहतरीन कोई ग्रुप नहीं है। 66% चैरिटी होल्ड करती है। सोचो, इसका प्रॉफिट 66% जो टाटा सन्स है ना, चैरिटी ट्रस्ट के अंडर में चला जाता है। सोचो इनका ह्यूमैनिटेरियन वर्क कितना होगा था। और भाई, इंडिया की पहली प्लांट सिटी जमशेदपुर, इंडस्ट्रियल सिटी इनकी बनाई हुई है। 1868 में जन्मा था, टाटा की कहानी स्टार्ट हुई थी। और अब कहाँ है? कहाँ नहीं है,
कहाँ नहीं है एक्चुअली में, कहाँ नहीं है? आप बताओ किस फील्ड में नहीं है? हर फील्ड में है। नेटवर्क ये दे रहे हैं, नमक ये बना रहे हैं, चाय पत्ती ये बना रहे हैं, भैया ज्वेलरी स्टोर ये चला रहे हैं, स्टार कॉफी ये पिला रहे हैं, होटल चाय ये ये बना पिला रहे हैं, होटल गाड़ियाँ ये बना रहे हैं। गाड़ियाँ ये बना रहे हैं, घर ये बना रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का। वोल्टास इनका जो बताया था आईटी उसने- सॉल्यूशंस ये दे रहे हैं। हाँ, अब वोल्टास जो था इनका जो ग्रुप है भाई, दुबई के बुर्ज खलीफा में काम, पूरा एसी का काम वगैरह किया इनके। फरारी F1 रेस ट्रैक, मैंने तो उसके नीचे वो देखा, $225 मिलियन का प्रोजेक्ट था, एक $85 मिलियन का था बुर्ज खलीफा में। ये सब लिखा था उसके पीछे कितने $1 मिलियन का। सोचो सोचो भाई, सोचो क्या वैल्यू है टाटा ग्रुप के। और हद से और- ज्यादा पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वो भैया किसी भी बिजनेसमैन को कुछ भी बोल देते हैं। टाटा के खिलाफ कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि टाटा इतना काम करती है ना, बहुत ज्यादा काम करती है, हद से ज्यादा काम अभी करती है। कोविड हुआ था भाई, जब कोविड चला था, अभी भी चल ही रहा है ओमिक्रॉन, तो उससे पहले जो कोविड आया था जिसमें पूरा लॉकडाउन था, लॉकडाउन वन की बात हुई है शायद। हाँ, रिलायंस ग्रुप ने और इन लोगों ने अपना जो है स्टील बनाने के लिए, इनकी जो स्टील की कंपनी है टाटा स्टील, उन्होंने अपना जो ऑक्सीजन होता है ना, स्टील बनाने में काम आता है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, वो उसको सप्लाई को उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दे दिया था। इन दोनों ग्रुप ने, इन सब लोगों ने इतना योगदान दिया है। और सोचो कितनी लाइफ बची होगी, सोचो वो नुकसान झेल के उन्होंने लाइफ बचाई है। अपना नुकसान झेल के। कौन बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा नुकसान हो जाए यार? बिजनेसमैन सोचता है कि बिजनेसमैन का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, हमें कोई मतलब नहीं भाई, क्या बट जाने बचाना। जबरदस्ती थोड़ी थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था लीगली बिल्कुल। भी, पर भाई किया इन लोगों ने अपने, ये देश प्रेम कहते हैं सर। सोचो इतना रिमार्केबल ग्रुप है। अब शायद 8 आवर पॉलिसी भी इन्हीं की देन है, इसमें शायद कवर नहीं किया। 8 आवर पॉलिसी जो इंडिया में है वो इन्हीं ग्रुप से आई है। मतलब 8 घंटे काम करा 8 घंटे काम करना एक दिन में इन्हीं का ही है। जाना जाता, यूके का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल अवार्ड मिला, मतलब एम्प्लॉयर का। सोचो यूके में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यही करते हैं। कोरस ग्रुप है उनका, टाटा स्टील ने एक्वायर कर लिया था, और अब टाटा स्टील सबसे बड़ा। अभी टाटा ने कुछ साल पहले अपना कोरस ब्रांड को वहां पे बेचने के लिए सोचा था। आप सोचो इतना बड़ी वैल्यू है कोरस की कि उनकी पार्लियामेंट ने असेंबली बुला ली थी इसको रोकने के लिए कि इतने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, टाटा ग्रुप बेच देता। ये पावर है टाटा ग्रुप का। ब्रिटेन की जहां तक बात आती है, जब बात आती है ब्रिटेन की, कोई भी कंपनी खरीदी सबसे पहले टाटा आगे जाता है। अलग ही मजा आता है भाई उनको ब्रिटेन की कंपनियों को एक्वायर करने में, अलग ही लेवल है। मतलब ब्रिटेन ने हमको लूटा था कि उनसे खरीद रहे हैं, बिल्कुल, पैसे देके लगा लो भाई मजा आ गया वीडियो का। आप देखो वीडियो और जानो इनके बारे में। और मेरे को तो लग रहा है थोड़ी पुरानी है, तो और भी कुछ नया चीज इसमें जुड़ी होंगी तो जरूर। और एम्प्लॉयज बड़े होंगे और रेवेन्यू बढ़ा होगा। बिल्कुल। नहीं, और क्या क्या बढ़ा होगा, सब कुछ बहुत बढ़ा होगा। तो 100 कंट्रीज थी, और भी कंट्रीज बढ़ गई होंगी। कंट्री बड़ी होंगी, बिल्कुल बड़ी होंगी। बड़ी होंगी। 100+ तो पहले से थी। मेरे को लग रहा है जहाँ पे पहले नहीं, साउथ अफ्रीका में भी बहुत जगह पे वर्क करना शुरू किया इन लोगों ने। तो ये है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तो मतलब सारा ट्रांसपोर्ट ही इनका है। सारे इनका ट्रांसपोर्ट की जितने भी ट्रांसपोर्ट की बसें टाटा का ही हैं, है। ट्रक्स हैं, टाटा का। डेवू ग्रुप, देवू बताया था, देवू साउथ कोरिया का बताया था कि वो भी है। डेटा करके थे। देवू देवू करके था, देवू DAEVWO शायद। जो जोकल्स, वो भी क्या नहीं था यार, मैं कितना नाम याद आ रहा है पता है तुम्हें? और तुमने तो देखा ही है यार। तुम बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो, क्या कहना चाहते हो आप लोग टाटा ग्रुप के बारे में। हम लोग के हिसाब से तो भैया सैल्यूट है टाटा ग्रुप को, बहुत ही बड़ा। इंडियन इकोनॉमी को जनरेट और बढ़ा रहे हैं, और भारत का वर्चस्व इनकी वजह से भाई फैल रहा है ना दुनिया भर आप में। सोचो, आप यूएस में घूम रहे हो, ठीक है, और आपको किसी ने चाय पिलाई वहां पे, टेटले की चाय पिला दी मान लो, फिर आप कह रहे हो भाई क्या चाय है, मतलब वो कह रहा है कि देखा कितनी बढ़िया चाय है, तो आप अगर आपको पता होगा तो आप बोलोगे ना हमारे टाटा देश की की है, है, हमारे देश की टाटा की है। हमारे देश की चाय पीते हो तुम, नमक भी खिलाएंगे तुम्हें। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। वीडियो करते हैं एंड। आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें बताएं, कोई रिकमेंडेशन हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, उसके बारे में अपनी राय देनी हो तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम जरूर पढ़ेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।